Now, what is meaning of knuckle joint? When you say knuckle means it allow to rotate about axis. उसका मीनिंग क्या करना है? नकल का मतलब यही है कि इट अलाउ यू टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस. दो एलिमेंट है विच यू आर ज्वाइनिंग, राइट? तो आप क्या करेंगे? उसको रोटेट कर सकते हैं. अब ये जॉइंट है, सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू सिंपली ज्वाइन टू रोड्स हैविंग डायमीटर डी. Okay. Now where it is used? Knuckle joint is used to connect two rods whose axes either coincide or intersect. ये important है. You have to remember this. It connect two roads whose axes are either coincide. Coincide मतलब एक ही लाइन में, ठीक है? और intersect कर रही है, तो यहाँ पे intersect कर रही है. तो अगर ऐसी situation है, there you can use this knuckle joint to connect two roads. And lies in a one plane. This is very important. जो एक्सिस है एक ही प्लेन में होनी चाहिए. एक ये है, दूसरी है. ऐसा नहीं है कि इस तरह से है, राइट? इट्स नॉट अबाउट it has to be in a same plane. So knuckle joint is used to transmit axial tensile force. See, try to focus over here with respect to quarter joint. In quarter joint, it is going to subject it to tensile load, axial load, as well as compressive load. But here only you can apply only axial tensile force. You cannot apply compressive force. The reason is because there is a knuckle pin over here, right? Which connect the two component, single eye rod or single end and double eye or fork end. तो यहाँ पे क्या है? बीच में पिन है और राउंड है. So when you apply compressive force, it will swell. It will try to rotate like this, right? So because of that, you cannot apply the compressive force. You can only apply the tensile force. Right, so knuckle joint is basically designed to sustain or transmit tensile axial force. Okay, the construction of this joint permit a limited angular movement. This is advantage with respect to quarter joint. Right, ये गोल पिन है और simply it is circular पिन है. Because of that you can have some angular deviation. जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में दोनों एक्सिस हो, थोड़े angular deviation चलेगा. Right, so it permit you the limited angular movement between two rods about the axis of pin. जो pin है नकल पिन, तो इसकी एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? Now let's look at the different components. Now knuckle joint is made up of three components, 1, 2 and 3. Namely, they are called eye, then the fork end, and then the knuckle pin. You can also remember like this, single eye, because there is only one circular slot is available, right? Here we have two slots, so it is also referred as double eye end, right? You can also refer as fork end. And this is the simple pin, it is referred as knuckle pin, or simply you can call it pin. Now try to understand how the joint is made. First you have to pick up this fork end, then you have to align this single eye over here, okay? Then insert your pin. And then try to insert this collar, bottom portion, right? Look at over here and insert the split pin so that the knuckle pin simply do not come out during the application of load. So this is how the joint is made. Now what we are going to do, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? तो इसके सारे जो डायमेंशंस है, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, राइट? ये विड्थ डायमेंशंस है, रोड डायमेंशंस है, राइट? इसकी थिकनेस है, ये सारे डायमेंशन हम रिलेशन में लेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे. सो द थिंग इज, what is design? Design means to find dimensions, right? To find a dimension if load is given and safe stress value is given. Design means also if you have a dimensions, आपके पास dimension है, then you verify. If the load is given, dimension is known to you, just verify by comparing with the permissible stress. अगर permissible stress कम आ रही है induced stress से, sorry, if the induced stress is less than the permissible stress, then you can say the dimensions that you have chosen or taken by thumb rule is safe in given conditions. So these are the two ways of designing, right? एक में हम dimension find करते हैं जहाँ पे what we have is simply load and stress. In second option we have dimensions, load is known to us, and we are going to find the induced stress. We are going to compare with the permissible stress. If it is less, it is safe. If it is not, it is going to fail, and we are going to modify the section. Now, what are the application of knuckle joints? Just try to look at the figures. Joints between the tie bars in the roof trusses.
दिस इज व्हाट द एग्जांपल इज। यस, यहाँ पे क्या है, उसका एग्जांपल है, ठीक है। नाउ अगेन जॉइंट बिटवीन द लिंक्स ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। अगर आपको मालूम है गोल्डन गेट ब्रिज, राइट, यूएसए में है, सैन फ्रांसिस्को में, तो इस तरह से उसका शेप है। सो ऑल दीज आर वायर्स, राइट, कनेक्टेड सपोर्टिंग द ब्रिजेस, राइट। ब्रिज जो है उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन बनेगा लिंक के हिसाब से बनेगा, फॉर्क के हिसाब से। यहाँ पे पिन आएगी, ये वायर होगा, बॉटम में जाएगा। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग इज। सो जॉइंट बिटवीन द लिंक्स ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। नाउ जॉइंट इन द वाल्व मैकेनिज्म ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अगर इफ यू कैन रिकॉल द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन वाल्व मैकेनिज्म, राइट, देयर ऑल्सो वी हैव अ फॉर्क एंड। एक जो एंड होगा वहाँ पे क्या करना है, कैम रोड को कनेक्ट करना है, तो वी हैव टू हैव अ फोर्क शेप, राइट। So where there is going to pin and there going to be a cam rod, right? So this construction itself is a knuckle joint type of construction. Now fourth application is fulcrum for levers. ये रहा, ठीक है। अगर हम किसी भी लीवर को देख लें, let me give you an example of pliers, right? So that pliers basically having a central joint, right? So this is what the fulcrum for lever. तो उसके क्या हो रहा है, ये जो पिन है, when you apply force, this jaw simply rotate about this pin, okay? It's simply rotating about this fulcrum point, right? If you pick up the example of tongue, तो उसको भी हम क्या करेंगे, तो जो बीच वाला जॉइंट है उसके आजू बाजू क्या होगा, when you apply the force, it going to grip the utensils, right? So this point itself is fulcrum, right? तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लीवर्स, राइट। बट हियर पिन इटसेल्फ इज वर्किंग हैविंग कंस्ट्रक्शन लाइक अ फोर्क एंड। दोनों में से वो पास होगी, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, दूसरा उसको सपोर्ट करेगा। सो दिस कंस्ट्रक्शन, इफ यू कंपेयर विद दिस फिगर, 3D फिगर, इट इज सिमिलर टू द नकल जॉइंट, राइट। तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन की डिस्कशन की हुई है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी ऐसी है, दो कंपोनेंट है, बीच में कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पिन इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस कंस्ट्रक्शन इज नकल जॉइंट, राइट। नाउ जॉइंट बिटवीन द लिंक्स ऑफ अ बाइसिकल चेन, जस्ट लुक एट द फिगर। तो यहाँ पे क्या है, किस तरह से जॉइंट हो रहा है, ये दोनों लिंक है, ये दूसरी यहाँ पे कनेक्ट करनी है, तो इसको यहाँ ले आएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे, राइट। सो व्हाट वी हैव इज, दिस इज द व्हाट द पिन, ये क्या है, सर्कुलर पिन है, और जो दूसरी लिंक है, एडजेसेंट लिंक है, उसको क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए ये लेफ्ट और राइट दोनों लिंक को कनेक्ट के लिए सर्कुलर पिन चाहिए। सो दिस इज व्हाट द सर्कुलर पिन। सो दिस कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ इज अ नकल जॉइंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट। हियर we are going to learn it about by taking the simple example, right? So design a knuckle joint to connect two rods of equal diameter subjected to axial tensile load of 12 kilonewton, right? Now tensile stress is given, safe stress is given 80. Now what does it means? When you apply a load on any component which is of tensile nature, right, which induce the tensile stress, its value should not be more than the 80. So limit is given to you in form of value. If it is crosses this, induced stress जो है वो बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, राइट। सो वी हैव टू कीप द इंड्यूस्ड स्ट्रेस लेस देन द परमिसिबल लिमिट। सो वी हैव गिवन द लिमिट, राइट। उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं, डायमेंशन फाइंड भी कर सकते हैं। उसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस है उसको इससे सेफ लिमिट से कम रखना है। Now we have also given the compressive stress 150 megapascal, right? And the third stress is given shear stress, which is of 60 megapascal. Now just look at the figure. What we have to design? We have to find out the dimensions of these three parts, right? But what are those? Diameter होंगे, ठीक है, thickness होगी, rod end diameter होगा, knuckle pin का diameter है, right? We do have to find the head diameters, okay? So let's go through the sketch. Now just look at, this is the 2D figures. If you compare with the separate 3D component in disassembled state, these are the same figures, right? But we are representing in form of simply the orthographic projections, right? But try to remember what are the name. This part is referred as single eye or one eye end. It is also referred in many textbooks single eye. एक ही eye है यहाँ पे, ठीक है। This part is also referred as two eye end or fork end. उसका जो shape है fork के जैसा है. That's why it is referred as fork end. Now this main component is joining component is knuckle pin. Many students refer simply as pin. Okay.
And lastly, we have collar and the taper pin, which simply remain the fix this position between two component. अगर इस्तेमाल करेंगे इसको तो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज है कि बिकॉज ऑफ रोटेशन, एंगुलर रोटेशन, इट मे कम आउट. सो टू रिस्ट्रिक्ट दिस एग्जिटिंग ऑफ द नकल पिन, वी हैव कॉलर ओवर हियर, राइट. अब ध्यान से देखिए भाई, फिगर में क्या क्या डायमेंशन दिए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे सारे डायमेंशंस वी आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ गिवन रोड एंड डायमीटर. ठीक है, प्लीज ये डायमीटर फाइंड करना है. वंस यू फाइंड इट, वी कैन टेक द रिलेशनशिप, जो डायमेंशन दिए हुए हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उसके रिलेशन में हम लेंगे और उसको क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे बाय फाइंडिंग द इंड्यूस्ड स्ट्रेस एंड कंपेयरिंग द इंड्यूस्ड स्ट्रेस विद द परमिसिबल स्ट्रेस, राइट. इफ द डायमीटर, if d is the diameter of rod, then the diameter of pin is also taken as d1 is equal to. ये क्यों लिया हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिजाइन जब हम आगे बढ़ेंगे. उसके बाद क्या हुआ, आउटर डायमीटर ऑफ आई, आउटर डायमीटर मीन्स आई मीन्स दिस वन. ठीक है, d2, उसको कौन से रिलेशन में लिया हुआ, वी हैव सिंपली टेकन 2 times इन रोड एंड डायमीटर, राइट. वी आर नॉट फाइंडिंग, वी आर टेकिंग एज अ रिलेशनशिप, राइट. ये रोड डायमीटर है, उसका आउटसाइड डायमीटर कितना है, 2 times हमने ले लिया, राइट. सो I'm talking about these dimensions, right? So this inner diameter is D, which is rod or simply pin diameter. Sorry. Now what we have is जो outer diameter है अपन, ये जो बाहर वाला है, we are going to take is D2 is equal to 2 times D, right? So we have simply taken 2 times. We have to justify whether this 2 times diameter is okay or not, right? Under the various failure situations. Then we are also going to take knuckle pin head and collar by these relations. जो नकल पिन का जो डायमीटर है कॉलर का, वो D3 इज इक्वल टू 1.5 ले रहे हैं. ठीक है, देन सिमिलरली थिकनेस ऑफ सिंगल आई और रोड एंड कितने ले रहे हैं, 1.25 पॉइंट्स, सॉरी, वी आर टेकिंग दी रोड एंड थिकनेस इज इक्वल टू 1.25 D. ठीक है, सिमिलरली फोर्क एंड और पिन इनके हम क्या कर रहे हैं, थिकनेस ले रहे हैं. ये सारे डायमेंशन हमने ले चुके हैं. अब उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा बाय सिंपली फाइंडिंग द इंड्यूस्ड स्ट्रेस एंड कंपेयर विद द परमिसिबल स्ट्रेस. ओके, नाउ let's consider various failure situations. जो फर्स्ट है वो है failure of solid road. ठीक है, now what is solid road, just look at over here, we are applying the force. Okay, so what happened, that load is 12 kilonewton. Now what will be the cross section, because it is circular road, the cross section will be circular. So we are going to have a diameter pi by 4 into d square. So this is the cross section area on which the load is applied. So we are going to use simple equation, stress is equal to force upon area. Okay, now we are going to multiply by stress and area like this. So we are having stress into area. Okay, so this equation is written in this form. We are taking the load on the left side and the area in the middle and the right side on the tensile stress, right? Now we are considering tensile failure only. Why? It is clearly mentioned in the application that knuckle joint can only take the tensile axial force. You cannot apply compressive force. If you apply it, it will try to rotate about the knuckle pin. It is not able to transmit the compressive force, right? So let's put the 12 kilonewton load over here. Then pi by 4 d square, and 80 is a limit given to us, right? So by taking safe limit of tensile stress, we are finding the rod and diameter 16. Okay, it may come out 14.15 or some similar, right? But we have to take higher even value. By thumb rule, it is 4 mm or 6 mm. We are going to adapt as 4 mm. So your diameter, this rod and diameter is d is equal to 16. ठीक है, अब क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन इज सिंपली फेलियर ऑफ द नकल पिन इन शियर. देखिए, यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, जस्ट लुक एट द फिगर. ये जो पिन है ना, इट इज जस्ट पासिंग थ्रू 2 component. One is single eye component and the fork end. So because of application of load in both direction, left and right, which of tensile nature, so there are possibility that this pin will simply shear off from this location as well as at this location. These are the location of 2 component, fork end and the single eye component, right? So just look at the figure. The pin may shear from this location and this location. So what are the area? The pin having certain diameter, let's say dp, p for pin, right? So I want to find out the diameter of pin which sustain the given tensile load. But because of tensile, the area is parallel to applied load, so the failure is considered as shear failure. When the load is applied parallel to cross section
and whatever the failure is generated is called shear failure, right? We call it shear failure. So we are writing this equation, load is equal to area into shear stress, right? But here the pin is getting failed at two locations. एक diameter इधर भी है, दूसरा इधर भी है. So we have to take a 2 times. That's why the 2 is given over here, right? So 2 into pi by 4 d1 square. 1 means simply, let me call it p. P for pin. Now try to insert the values and find out the diameter d1. Just look at the carefully. What I have calculated over here is the d1 is comes out to be 11.28, right? I can take it 12 mm. Now there are chances that this knuckle pin may fail not in shear but in bending. यहाँ पे देखिए जो पिन है मैंने उसको क्या किया, बेंड किया हुआ है. देर आर चांसेस ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस में थोड़ी गैप आएगी तो क्या होगा, तो रादर देन पिन इज गेटिंग फेल इन shear it may fail in bending. So here we need to make knuckle pin safer in both failure situation. One is shear failure, second is bending. But in this case only it is taken care of shear. But what about the bending? So what we are doing, we are simply increasing the dimension 11.28. We are taking higher value so that we rest assured that it is also not going to fail in bending. अब कितना लेंगे 11.28 उसका 20 लेंगे, क्या करेंगे? So we are simply keeping the diameter of P equal to the rod end diameter. Just look at these things. यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि we are going to take if the D is the diameter of rod, then the diameter of pin is taken equal to the pin diameter, right? So the pin diameter कम आने वाला है. So but we are increasing to a value which is equal to the rod end. That means we are making more safer the pin dimensions in shear as well as in bending, right? So we are normally increasing the dimensions and making equal to the rod end diameter. Hence we ensure safe working of pin in double shear as well as bending. Okay, so this is why we are simply equating the dimension of both pin and diameter, rod end diameter, right? तो दोनों का dimension क्या है, same है. This the reason is what we want to make it the pin safer in shear as well as in bending, right? Now let's talk about the single eye end. अब single eye end कौन सा है, ये वाला. This is what the single eye end, right? So this is what single eye. उसके सारे डायमेंशन हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं या फिर लेकर उसको क्या करना है, we have to justify it, right? So let's talk about the single eye. When you apply load, you have to think about the situations, how it is going to fail, because the pin is applied like this. So there are chances because this is a hollow section from which the pin is passing. So it is possible that because of this hollow section there is a less material available. Hence it may fail across the slot or where the hole is provided for the pin. तो टेंसल में फेल हो सकता है. But we have to find out at which location. So we are considering the central location or central section, right? So we are cutting it like this. We are cutting the central section. So what is the possibility? So this is the section on which the load is applied. So we are interested in this resisting area, right? So what is this resisting area is? So the equation is failure of the single eye rod and in tension. तो टेंसाइल लोड ही लगा रहे हैं तो टेंशन में वो फेल होगा, लेकिन कौन से एरिया पर रेजिस्टेंस लगने वाला है. सो द आउटर डायमीटर वी हैव चोजन इज D2. हमने पहले ही ले चुका है और हमने क्या किया है, वी आर जस्ट टेकिंग इट 2 times द पिन डायमीटर, राइट. सो D2 माइनस D1. यहाँ पे देखिए ये है D2 एंड दिस इज D1, राइट. आई वॉन्ट टू टेक दिस डायमेंशन, राइट. तो कितना होगा, आउटसाइड होगा D2 और इनसाइड क्या होगा, पिन डायमीटर. वी कॉल इट D1 विच इज इक्वल टू रोड एंड डायमीटर. सो वी आर सबस्ट्रैक्टिंग वन ऑफ द रेक्टेंगल. आई वांट टू फाइंड आउट दीज डायमेंशंस, राइट. तो क्या होगा, बाहर से जो है D2 उसमें से D1 हम निकाल लेंगे. सो व्हाट वी हैव इज दिस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस ऑफ अ सिंगल आई. सो दिस इज व्हाट द थिकनेस ऑफ सिंगल आई. क्लियर, दिस इज द थिकनेस. नाउ व्हाट वी हैव रिलेशनशिप. Here it is clearly taken 2 times the rod end diameter, right? So D is 16, so we are taking 2 times, so D2 is equal to 32. Now we are replacing D2 is 32 minus 16 and T is taken 20.
Now how the T comes out? Again it is taken by relationship 25% more than the rod end or pin diameter. So 16 है उसका 25% कितने ज़्यादा होगा 20. So we are placing it. Now we know everything except the tensile stress. यहाँ पे कंफ्यूजन है, टेंसाइल स्ट्रेस दी हुई है कितनी 80, वो नहीं लेनी है. क्यों नहीं लेनी है? लेकर हमें डायमेंशन फाइंड नहीं करने हैं बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ डायमेंशंस. सो विथ यूजिंग द डायमेंशन द लोड वी आर गोइंग टू फाइंड द इंड्यूस स्ट्रेस. हम क्या करेंगे? इंड्यूस स्ट्रेस को फाइंड करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे. सो वी आर गोइंग टू कंपेयर इट. सो द टेंसाइल स्ट्रेस कम्स आउट टू बी 37.5 और द गिवन वैल्यू इज 80. यहाँ पे देखिए कितनी दी हुई 80. सो फॉर द अप्लाई लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन and the outside diameter of D2 is equal to 32 and the inside diameter for the pin is 16 and T is equal to 20, the given section, which section? This section is safe under the tensile failure. Why? Because the induced stress is much lower than the permissible value of 80. So the relationship stands well or safer for the tensile failure in case of single eye. Now let's consider the failure of the single eye or rod end in shearing. अब ये कैसे होगा भाई? पॉसिबल है अगर जो पिन है हमारी वो स्ट्रांग है और ये हो सकता है यहाँ से निकाल दे. पिन हमारी कहाँ है? स्ट्रांग है, हम उसको पुल कर रहे हैं. तो व्हाट हैपेंड? इट मे हैपेंड फ्रॉम दिस साइड द सिंगल आई मे shear ऑफ. आप उसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि ऐसा पीस बाहर निकलेगा, राइट? दिस वन लाइक दिस. ओके, सो pin is over here, there is a head and there is its body which is in contact, right? And we are pushing it, we are applying a load and there is a outside a single eye, right? So possibility यहाँ से shear off होगा, right? So we want to find out this area. So this area is simply thickness and this simply this dimension L. So how can we find? Very simple, D2 minus D1 into T. अब ये कैसे आए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अगेन मैंने एक्सप्लेन किया भाई मुझे ये डायमेंशन चाहिए, राइट? सो हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल? यहाँ से कैसे आएगा? अब वर्टिकली देखिए कि shear ऑफ करना है तो कौन सा डायमेंशन आएगा? तो ये रेक्टेंगल बन रहा है हमारा, ठीक है? दोनों तरफ बन रहा है. सो हाउ कैन वी फाइंड इट? वेरी सिंपल, बाहर का जो डायमेंशन है दोनों तरफ क्या है? इस तरह से है. आउटसाइड डायमेंशन इज D2, इनसाइड इज फॉर D1, देन डिवाइड बाई 2. क्या करेंगे? D2 माइनस D1 डिवाइड बाई 2. क्यों करेंगे? हमें हाफ रेक्टेंगल सेक्शन चाहिए, तो इतनी विड्थ चाहिए, लेंथ चाहिए, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे. लेकिन देर आर 2 एरियाज, आगे वाला भी शेयर होने वाला है, देन इट इज ऑल्सो द सेकेंड एरिया. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई 2. सो दिस 2 कैंसल आउट. दैट्स वाई वी हैव रिटन डायरेक्टली D2 माइनस D1. एक्चुअली इट इज 2 टाइम एरिया into D2 minus D1 by half length of a rectangle and the thickness and the shear stress. But here we simply cancel out the 2 and we are writing the straight away D2 minus D1 into T. Now from these equations what we can find? We know all the values, right? D2, D1. We simply again find out the shear stress is 37.5 which is much less than the shear stress given 60. इसका मतलब ये हुआ द सिंगल आई एंड जो है इट इज सेफ इन टेंसाइल फेलर एज वेल एज shear फेलर फॉर द गिवन रिलेशन ऑफ वैल्यू D2 इज इक्वल टू 2 टाइम T इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स T, राइट? तो हमने जो ये रिलेशन लिया था वो सही है. उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होगी, इंड्यूस होगी, टेंसाइल और shear stress, दे आर गोइंग टू बी मच सेफर देन द गिवन लिमिट. Hence the chosen dimensions or the relation dimensions is okay, right? Now let's talk about failure of single eye or rod end in crushing. देखो, this is the third failure. Again I have shown in terms of figure, right? 2 dimension figure. क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये shear नहीं हो रहा है, tensile failure नहीं हो रहा है, means single eye end is very strong in shear as well as tensile failure. So third failure is remain which is crushing. क्रशिंग क्यों होगा? द रीजन इज वी आर पुशिंग, वी आर अप्लाइंग टेंसाइल लोड आउटवर्ड, राइट? यहाँ पे क्या होगा? फोर्क एंड होगा, वो यहाँ पे खींचेगा, तो पिन क्या करेगी? यहाँ कॉन्टेक्ट करेगी, राइट? इट इज गोइंग टू कॉन्टेक्ट ओवर हियर, राइट? सो दैट इज 2 faces coming each other front to front and that is crushing situations, right? So there are possibilities कि ये जो एरिया है हमारा क्रश हो सकता है.
So we do have to make it safe in crushing. That's why we have here considering the crushing failure of single eye. Now what is equation? Very simple. ये जो राउंड सेक्शन है यहाँ पे पिन कांटेक्ट करने वाले, इससे प्रोजेक्ट एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल एरिया जितना, राइट? सो दैट रेक्टेंगल एरिया इज सिंपली पिन डायमेंशंस एंड द हाइट ऑफ द single eye thickness, right? So here the load is equal to d1 into t into compressive stress. Again we are having the values 16, 20 and 12 kilonewton load, right? Just find out the sigma c crushing stress. Again it is much safer. Why? Because it is less than the 150 limit. Induced stress कितनी है? 37.5 और the D की उतनी limit कितनी है? It is 150. So it is much safer, right? So now we can say, because the single eye is safe in tensile failure, shear failure and crushing failure, it is going to survive the given load 20 kilonewton with the given dimensions range. D2 is equal to 2 times D, thickness is equal to 1.25, right? So we have chosen this dimension, we make it safer. We just justify by comparing the induced stress with the permissible stress. तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है? सिंगल आई की जो डिजाइन है यहाँ पे खत्म हो रही है और इट इज ओवर. मोस्टली ऑल द डायमेंशंस आर ओवर. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्क एंड. दिस इज द फोर्क एंड, राइट? आई हैव टेकन द फिगर फ्रॉम द बुक्स, राइट? ध्यान से देखें, केयरफुली ऑब्जर्व व्हाट आर द डायमेंशंस रिक्वायर्ड. It is similar, the design of fork end is similar to the single eye. We do have to consider the tensile failure, crushing failure, right? So the first failure is failure of fork end in tensions. Just look at carefully, right? Now what are the areas? Now try to see the hatch area is the area on which the load is acting, or you can say it is resisting area. हमें उसका क्या करना है? डायमेंशन और एरिया फाइंड करना है. If you know the mathematics, it is very simple. d2 minus d1 into 2 times t into sigma t. Now just focus on only one area. So d1, this is, let me call it d2 over here, right? This is figure from different book, right? So notation may be different, but the concept is remain same, right? So d2 minus d1, okay? So this is what the horizontal length of the rectangle. Let me combine this cross section over here so we can understand. I'm just moving this part and putting side by side so you can understand this is the total resisting area, right? So the horizontal length is very simple, d2 minus d1, and the vertical height means this one, which is the thickness t1, right? I'm taking this thickness t1, okay? So but there are two resisting areas, one at the top and one at the bottom. So we are multiplying by the 2 times, okay? Now by putting the relative dimension that we already know, simply find out the tensile stress. अब कितनी आ रही है? It comes out to be 31.25. Now the permissible safe stress value is 80. So you can say the induced stress is much less than the permissible value or the safe limit. Hence, the fork end is safe in tensile failure. It is not going to fail with the given dimensions. हमारा जो dimension है 32, 16 and the thickness, right? So based on that, it is not going to fail for the 12 kilonewton load under the tensile conditions. Now let's consider the second possibility. Second possibility is failure of fork end in shear. Failure of fork end in shear. देखिए क्या होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कैसे होगा. यहाँ से हो सकता है लाइक दिस, राइट? एज यूजुअल व्हाट वी हैव लर्न इन द सिंगल आई. तो उसका हमें डायमेंशन निकालना है. वेरी सिंपल, इट इज़ 2 टाइम्स, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, राइट? सो वी हैव टू हैव 2, ओके? सो d2 माइनस d इंटू 2 इंटू t1. आगे भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई 2 एरियाज हैं, राइट? और those areas हैं, that's why we have 2 times. But here we are considering shear failure, so we want half dimensions. यहाँ पे भी rectangle होगा यहाँ पे, लेकिन हमें half चाहिए, तो we are going to divide it by 2, right? Okay, but there are 2 areas, hence we are going to have a 2, first and second, third and fourth. So first and second will cancel out these 2. But what about this? Again, it is cancelled out, but there are 2 areas. That's why we have 2. It is not 2 times thickness. Okay. So we have to
let me put it like this, the top areas or shear areas over here and this area is over, right? So we are adding by height. Okay, so 1 and 2. Okay, but there are again front and back, दोनों एरियाज हैं, पीछे भी है आगे भी है, उसका दो दो कैंसिल हो जाए, इसका दो दो कैंसिल हो जाए, बट देयर आर वर्टिकल हाइट, सो वी हैव टू ऐड बाय 2 dimensions, right? Means 2 means there are 2 areas. Now add them, simply insert the values of the given dimension, find out the shear stress. Now again it comes out to be 31.25 and it is much less than the 60. So you can say the forkand is also safe in shear failure, right? Now let's consider the failure of forkand in crushing as we considered in single failure, right? हमने जो क्या किया था, कंसीडर किया था क्रशिंग फेलियर ऑफ सिंगल आई, जो पिन है उसको क्या करेगी, फोर्स करेगा, ठीक है. तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं फोरकैंड में भी है. सो वी डू हैव टू वेरीफाई द सिचुएशंस. सो कहाँ पे फोर्स करेगी, यहाँ पे. सो दिस इज द पिन वेयर इट इज फोर्सिंग बिकॉज ऑफ अप्लाइड टेंसाइल लोड, राइट. सो दिस एरिया वी आर इंटरेस्टेड इन, दिस एरिया वी आर इंटरेस्टेड इन. सो हाउ मच इट इज, very simple, this diameter which is pin diameter D1. Okay, then what is vertical height, T1. So this is T1, but there are 2 areas, 1 and 2, right? So that's why we are adding 2. Now insert the values of the known dimensions, then find out the crushing stress. Because it is crushing failure, we have to compare with the crushing values, right? Now the crushing value is 150 megapascal and the given value is 31.25. So you can say the double I or forkand is also safe in crushing along with the safer condition in shear as well as tensile, right? And the failure of knuckle pin in bending, ठीक है. अब देखिए, I have already explained you that there are chances of failure of pin in bending, right? So यहाँ पे क्या करना है, bend हो सकती है similar to the quarter joint और जैसे quarter in quarter joint, right? So here we have the figure. Okay, so from single eye we are pulling in this direction and from the forkand we are pulling in this direction, but the forkand, because of bending situation, the contact on the forkand side will be trapezoidal, right? यहाँ पे ज़्यादा maximum contact करेगा, यहाँ पे कम करेगा. So the maximum force and minimum contact are almost zero. So we have simply the trapezoidal situation, right? But here on this side, the single eye itself is pulling on the right side, so there are going to be uniform contact. So because of that, we are simply taking the uniform load, right? But we are finding the moment, right? So we have to take from the center axis. तो ये इतनी कितनी है और इसकी कितनी है. So यहाँ से ये जाएगी, यहाँ से ये जाएगी, right? So we are finding from higher value to from the lower value. So from the figure, we can write like this: the bending moment is equal to P by 2 into T1 by 3 plus T by 2. Now do not confuse how this comes out. I can explain in class theory, right? I'm going to explain in the practical sessions, right? It's a little bit longer, but just try to remember this is the bending moment from this portion side, this side, right? So the force applied is P by 2 and we want to find out the dimensions, that is distance. Moment क्या है? Force into its perpendicular distance. यहाँ पे F क्या है? P by 2 है. क्यों? Because we are considering the half section, right? So we are dividing the load in 2 portions because it is simply supported. As per the standard of knowledge, what we are going to, we are simply finding the bending moment on the central section on the right side or the left side. Okay. So here we are subtracting the bending moment of forkand from the single eye, right? So this is the situations. So finally this is the equations. So T1 T किसकी thickness है? This is the thickness T. ये क्या है? T1. Okay, now we have to consider the section modulus Z. अब bending moment कैसे बनेगी? bending stress is equal to bending moment, maximum bending moment divided by section modulus Z. हमें ये मालूम है, हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है section modulus Z. अब ये rotating part है, so we have to find out it is rotating, it is bending moment of inertia is taken about this vertical axis, right? तो वो bend कैसे होगी? और कैसे? simply perpendicular to spin, it is going to bend. So we have to take a section. Because it is circular, we have to take vertical and horizontal. So Z is equal to I by Y. So pi by 64 d raised to 4 divided by d by 2. So 2 cancel out, 1d cancel out. And this is what the remaining section, right? So here, it is bending about this axis perpendicular to the screen, right? So pi by 32 d1 cube. Now we know the value of this.
So we can find, we know the value of the load, thickness T1 and T and D1. So we can find the moment, which is comes out to be 54,000 Newton millimeters. Okay. Then we simply find out the moment of inertia, section module of Z, which is 402. Now divide. This is the equation of finding the bending stress. Just look at the carefully what we are doing here. We are simply finding the bending stress induced in a knuckle pin, and this is the equation for that. Okay, that you have learned in the strength of material, right? So we simply find out the bending stress maximum and the section modulus Z. Now divide this value, find out the division. Here it is 132 megapascal. So generally bending stress is taken, safe stress is equal 1.4 to 1.6. I repeat, 1.4 to 1.6 times the tensile stress. Okay. So here it comes out to be 112. Now induced bending stress is much higher. So here the knuckle pin for the given dimension is getting failed in bending stress, right? Bending stress कितनी आ रही? ज़्यादा आ रही है, permissible value से ज़्यादा आ रही है. What we are going to do? We are going to simply increase the dimensions, right? Now what we have is, because this is more than that, the knuckle pin is failure in bending. तो क्या करेंगे? We are going to simply increase the dimension of pin, right? तो पिन के जो डायमेंशन 16 हमने लिए था, we are going to take now 22 by thumb rule, increase by 6 mm. When the dimension is failing, increase by 6 mm. Okay, so here we have increased the diameter of pin by 22. Again find out the things, right? Find out the bending stress, recalculate it. So again bending stresses comes out very less compared to the 112, right? So हमने क्या किया? पिन का diameter बढ़ा दिया. Once you increase the pin diameter, we have to change all the dimensions. Now this is the dimension table, right? रोड डायमीटर कितना है? अब 16 नहीं लेंगे हम, पिन का डायमीटर कितना लेंगे? 22 लेंगे. ठीक है. यू कैन कीप रोड डायमीटर 16. आउटर डायमीटर कितना होगा? चेंज हो जाएगा, बिकॉज वी हैव इंक्रीज द पिन डायमीटर फ्रॉम 16 टू 22. सो दिस इज द इम्प्रूव्ड डायमेंशन. वी कैन नॉट टेक द ओल्डर डायमेंशंस. ओके, यहाँ पे 16 था, 32 आया था, लेकिन हमने क्या किया? वी हैव, बिकॉज द pin is failed in bending, and with respect to bending we have tried to make safer all the dimension of single line and the double line, right? Because the pin dimension has changed, the respective dimension is also going to change. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पिन डायमीटर हमने क्या किया है? बढ़ाया है. तो डेफिनेटली जो रिस्पेक्टिव डायमेंशन है D2 इज इक्वल टू लेट्स से P times the pin diameter is also going to safer in tensile, shear and compression. We do not have to recalculate. एक चीज़ ध्यान में रखें कि पिन फेल हो रही है तो डायमेंशन बढ़ाइए और नए डायमेंशन जो है टेबल में लिखिए. ठीक है.